So I think today we need to learn pointer. Okay. So tell me what is pointer? Hmm. Means it it holds address of memory. Hmm? Okay. And else कुछ और? So it holds address of memory. So it is variable. Hmm? That holds address of memory. Clear? So it is a variable. So we can define any kind of variable. It may be like int. It may be like float. It may be char. आज पूरा ना 4 दिसंबर तक चलेगा ना? Int, float, char. So there are different types of data type. According to data type, we can define pointer. So how pointer is going to represent using a star. So a star is known as dereference operator. And we can say sometimes it value add. Value add. And there is another operator that is known as address of. Hmm? So pointer is what? A variable that can hold address of memory. So now, if we take one integer pointer, so p means what? P is a variable. P is a variable, and that each location of this variable in memory, let it is 1000. That it holds what? Value. Value of this pointer should be only address. Only address. When we take integer I, meaning of this one is what? I is a variable having some address because of every variable stored in memory, having some address, and there is some value here. If we assign I equal to 10, it means that 10 is going to store in I. So this one is known as value of I. This one is what? Address. And this one is what? Name. So it is name, it is value, and it is address. So you can note down this one. Hmm? So now, if P is a pointer, if you want to assign P equal to 20, meaning of this one is what? Value of P is 20. So value of P means you want to store 20 in this location. So whether you can store 20 in this location, answer is incorrect. Why? Pointer is what? Pointer can hold address of memory. It means it is a kind of error because P can hold only address. It means in P you need to store address.
Let address of I. Address of I means 2000. Now this 2000, address of I means what? 2000. Now this 2000 is going to store in P. So value of P must be address. Clear? So it is a kind of error. Got it? So once P equal to address of I, if this one is written, so it is what? Wrong. If someone may print some value like printf, percent %u, percent %u, percent %u, percent %u, percent %u. U means unsigned integer. U means unsigned integer. Percent means any integer. And now let me write I, address of I, address of P, P, and pointer P, and pointer address of I. So this I means 10. Address of I means why address of I is 2000. Address of P is 1000. P means 2000. Now pointer P. P means 2000. Pointer means value add. So value add 2000. So value add 2000 is what? 10. And this was address of I. Address of I 2000. Again pointer means value add 2000. That is 10. So P means value of P. Pointer means it points to some location, so it can point that value. Clear? So pointer is a kind of master, and there is one slave. Got it? And master has power to change the value of slave. That is, using this procedure, if we write pointer P equal to 80, what is the meaning of this statement? P means you are going to store here, but it is not P only. It is pointer P. Means P means 2000. Pointer means value at 2000 equal to 80. Value at 2000 equal to 80. It means I equal to 80. Clear? It means using pointer we can change the value of pointed variable. No problem. So pointer can change value of another variable if it can hold address of that variable. Clear? So pointer पास power है, क्षमता है, master. So I is what? A kind of slave. And master is what? P. So P has power to change the value of I. Clear? आ रहा समझ में? So it is normal procedure. Understand? If we write I equal to pointer P, whether it is correct or not. So P means 2000. P means 2000. Pointer P means value. Pointer P means value at 2000. See what it is? 10. Let me understand all these lines are independent. Okay. So pointer P means 2000. Pointer means value at 2000. That is 10. So 10 is what? Normal value. Normal and very normal value. So this normal value can be stored in normal variable. So I equal to 10. Clear? Even we can write plus pointer P plus 10 or 100. It means it is 10, it is also 10, and it is what? 100. So 10 plus 100 is 120. So this 120 is going to store in I. Got it? No problem. So it is method to understand something. Let someone may say I equal to P.
So what kind of value I can hold after this line? I is very normal variable. Normal. P is what pointer? P means yes. P 2000. P is 2000. Obviously, I means 10. Similarly, P is what? 2000. 2000 is what? Address. So this address is going to store in I. Normal variable cannot hold address. So it is error. Got it? Hmm? So be careful. Who can hold address? Only pointer. Normal variable can hold only normal value. Clear? So be careful when you perform or storing any value in any normal variable or any pointer. Got it? So once you will be manager, okay, then there are several employed under your guidance. Hmm? Whatever you may say, obviously they need to follow. And if someone may tell you, let you perform work like operator, you can deny. Clear? So pointer is what? Variable which can hold address. So it can control another variable. So it has power to change the value of another variable. Clear? If someone is normal operator, normal person, they cannot dictate like okay manager. No problem. वहां भी हम ही दिखते हैं. हाँ वो टाइम दिखा रहा है. नहीं 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 बच्चे लोग पढ़ते नहीं ना. So let me see another example of pointer. So I think you got some idea about pointer or not. Let me see one another example. We have integer I and j, and there is one pointer p and one pointer is what? X. Hmm? I equal to 10, whether it is correct or not. J equal to 20, correct or not. P equal to address of I. X equal to address of j. Hmm? It means using these four lines, what kind of changes are there? It is I and it is j, it is p and it is x or not. So let address of this one is 1000, address of j is 2000, address of p may be 3000 and address of x is 4000. We assume these are some addresses. I holds 10, so value of I is 10, value of j is 20, value of p. So tell me in p what we can store? P equal to address of I. See what is address of I? 1000. So we need to store 1000 here. X. So what kind of value we can store here? 2000. And it is correct. Why? Pointer can hold only address. You cannot give another kind of value. कहाँ रहती है? जीएस है या बहुत दूर से आते? जीएस है. वेरी गुड. पांचवें फ्लोर रहती होंगे ना? फिफ्थ फ्लोर रहती होंगे. वेरी गुड. उतरने देते कितना टाइम लगता है? 5 फ्लोर से नीचे उतरने में आधे घंटे लगते हैं. So now after this line,
We assume all lines are independent and it is your fixed. Clear? So if someone may write P equal to X, then tell me whether it is correct or not. क्या पढ़ा रहे पता है? पॉइंटर. तो जरा नहीं पढ़ा है. पॉइंटर ऐसा होता है. ठीक है? एक्स्ट्रा लगा. पॉइंटर के अंदर क्या होता है? पॉइंटर अगर है इसके अंदर सिर्फ एड्रेस आएगा. एड्रेस एक आई ली. I is variable. So let and then okay, it is address, it is value and name. It is address, it is value and name. If I equal to 10, then value of I is what? 10. So if we write P equal to 20, P equal to 20 means what? In P you are going to store 20. So it is a kind of error. Why? In P you can store only address because of it is pointer. But in I you can store value. Why? I is normal variable. So in normal variable you can store value. But if it is pointer, so in pointer you cannot store normal value. So in P you can write address of I. So value, P means what? Value. P means value. Address of I 2000. So this 2000 is going to store. So it is correct. Got it? So if someone may ask you what is the output of this printer, so first output is what? I. I means 10. Yes, I means value. I means value. Why? I is a normal variable. I is normal variable. So I equal to 10. So someone may ask you what is the output of I? 10 or not? जब I में 10 रखे हैं तो प्रिंट भी 10 ही होगा, कुछ और हो जाएगा. 10 होगा. कैसे? हम यहाँ बता रहे, it is name, it is value and it is address. Clear? So if you want to print address of I, you can write address of operator then I. So it can print 2000. Address of P. Tell me what is address of P? 1000 because it is address. So P is address of P means what? 1000. P means value, like I means 10. P means 2000. Clear? No problem. So P points to 2000. So P holds what? 2000. Pointer P. Pointer P means what? Pointer means value add. Value add. So P means 2000. P means 2000. Pointer means value add 2000. So tell me value add 2000. Then value add 2000. Value add 2000. Then value add 2000 is 10. So it can print 10. Now address of I. Address of I means 2000. Pointer means value add 2000. So value add 2000. Clear? So pointer is a kind of manager, and it has power to access some another location because of P holds 2000. So using 2000 we can access it. So now if someone may say pointer P equal to 80, meaning of this one is what? Pointer P equal to 80. So 80 is going to store where? P means 2000. Pointer means value at 2000 equal to P means 2000. Pointer means the value at 2000 equal to 80. So value at 2000 equal to 80 means value at 2000 equal to 80 means in I you are going to store 80. It means actually meaning of this one is what? In I you are going to store 80. It means pointer has power to change value of another variable. Why? Because of it holds address. I equal to pointer P plus 100. I is what? Normal variable. I is normal variable. I is normal variable. So pointer P means 2000. Pointer means value at 2000. Tell me value at 2000 is what? 10. It is also 10. It is 100. 10 plus 100 is what? 120. So this 120 is going to store in I. Clear? I equal to P. P means
Tell me value of P. P means 2000. P is 2000. Hmm? I means 10. P means 2000. So 2000 is going to store in I. But P is what? P holds address. So this one is the address. So I cannot hold address. Clear? But when we write I equal to pointer P, then it is correct. Why? Yes. So it is a kind of value, normal value. So normal variable can hold normal value. But normal variable cannot hold address because of P means 2000. 2000 is address. So this address cannot be stored in normal variable. वेरी गुड. अब ध्यान से देखेंगे, इतना रिपीट कर दिए, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे. और भी कोई आने वाले हैं? चलिए, सब ऑनलाइन आप देख रहे हो. So now let me take another example. I, E, I, J, pointer P, pointer X. These are some variables. I is what? 10. J is 20. P equal to address of I. X equal to address of J. So if I, J, P, X, these are some variables. So we assume address of I is 1000. Address of J is 2000. Address of P is 3000 and address of X is what? 4000. Because of these are the variables, so which is going to store in main memory. So some addresses are there. I equal to 10, whether it is correct or not. Correct? Why? I is a normal variable, so it can hold 10. J equal to 20, so value of J is 20. P equal to address of I. P equal to address of I. So in P you can store address. Address of I is what? 1000 you can store. And X equal to address of J. So X is what? Pointer, so it can hold address. Okay? So address of J is this. So after this one, we are going to write some statements. We assume all these statements are independent. Then tell me P equal to X is correct or not. Is that correct? इसका मीनिंग क्या हुआ? Meaning of this one is what? In P you are going to store X. X means 2000. 2000 is address. That's why it can hold. Clear? 2000 is address. So P can hold address only. So it can hold. It means that using this one, P and X both. Okay, these two are master of J or not. So using P you can change the value of J, and using X you can change the value of J or not. So there are two masters of this J. X and P both pointers can change the value of J or not. Understand me? Now X equal to address of I. Tell me whether it is correct or not. No. So in X can hold only address. X can hold only address. Address of I 1000. So 1000 is going to store. Correct. Clear? X is a pointer. Pointer P equal to address of J. Address of J is 2000. So who can hold 2000? Only pointer. Only pointer. So who are the pointer? P and X. So it can say P means 1000. Value at 1000. Value at 1000, that is in I. You are going to store address of J, that is 2000. So whether I can hold address of J?
No, so it is error. You are not going to store in P. You are going to store somewhere else. Clear? So be careful. Got it? So address of J. Who can hold address of J? Only pointer? It is pointer. Nothing like pointer. See closely. आसान में पॉइंटर लिखने से पॉइंटर नहीं हो जाता है. उसको पूछेंगे बुलाकर इधर आ पॉइंटर हो. हाँ हाँ पॉइंटर पूछेंगे अच्छे से. If you are P, then okay. Pointer P means you are not going to store in P. You are going to store somewhere else or not. आसान में क्या होगा? P means here. P means 1000. Pointer means value at 1000 equal to. Value at 1000 equal to. Value at 1000 equal to means you are going to store something in I. So I is normal variable. Normal variable can hold only normal value. Got it? Very good. So it is error. Be careful. Now, J equal to pointer P. एड्रेस ऑफ आई क्या है? ये राइट हैंड साइड, ये वैल्यू इसमें जाएगा. 1000 कहां जाएगा? ये हम क्या करें? ये लाइन सही है कि नहीं है ये पूछ रहे हैं ना आपसे. ये इक्वल का मतलब क्या रखना. वो है तो रहने दे, उसको देखकर हम रख रहे हैं. कुछ चेंजिंग होगा ना वेरिएबल में. सो दिस वन इज करेक्ट. Now G equal to pointer P. Correct or incorrect? J is a normal variable. So J is a normal variable. It can hold only normal value. So tell me, P means 1000 by looking. देख रहा है सही से? P का मतलब क्या होगा? 1000. यहाँ क्या लिखा है? Pointer means value at 1000. So value at 1000 is 10. 10 means normal value I. So this value of I is going to store in J. So it is correct. So in J we are going to store 10. आ रहा है साथ में? अभी आप कुछ लिखी नहीं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा और फॉल्ट होगा. ठीक है, धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे. ध्यान से, लेट नहीं आएंगे. ठीक है, किसी को नहीं आता है समझ में लेट आने से. आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट. P equal to x plus 1. In P, x is what? 2000. That is address plus 1. It becomes 2000. Sometimes 2, sometimes 4. Plus 1 means what? It can multiply with data type of x. Size of data type of x. X is what? Integer. X is integer. Size of integer in turbo C is 2. So it can multiply by 2. If it is another compiler, then it can multiply by 4. Clear? So plus 1 means if it is float, double. Plus 1 means what? Multiply with data type of that variable. Size of data type of that variable. आ रहा साथ में? Clear? So it is correct. It is also address. Now I equal to
let these two lines are connected. Let these two lines are connected. I equal to P minus X. So P is this value. You can take X from that location. So P is what? 2002 minus 2000. So 2002 minus 2000 is 2, but it becomes 1 divided by 2. So value of I will be 1. So now it is a problem that what kind of arithmetic operation you can perform. And also what is the result of expression? So here you can add address with any integer. Got it? And result is always address. Clear? So in address you can add integer. Result is always address. So pointer can hold. When you perform address, plus minus is applicable. Address multiplication or division with integer, it is what? Error. Got it? आप किसी एड्रेस में क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस कर सकते हैं इंटीजर, ठीक है, और दूसरा नहीं कर सकते. साइड बाय साइड ये सब थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, ठीक है. हम पढ़ा नहीं रहे हैं कुछ, बहुत स्लो स्पीड है. अब देखेंगे एड्रेस माइनस एड्रेस, address minus address is possible, and returning value is always integer. Clear? So when you find difference between two addresses, it can give you distance. Got it? But address plus address, multiply, divide address, all these cases it can give you error. Got it? आ रहा साथ में? सही है? याद रखना है, एड्रेस माइनस एड्रेस, इट कैन गिव यू इंटीजर. और एड्रेस में क्या प्लस माइनस कर सकते हैं? ओनली इंटीजर. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई विथ इंटीजर. और दो एड्रेस ना जोड़ सकते हैं, नाइदर यू कैन मल्टीप्लाई नॉर यू कैन डिवाइड. क्लियर? आ रहा? Yes, P minus X means correct. So difference between these two addresses is what? Integer. So integer can hold. It is normal variable. So normal variable can hold normal value. P minus X कितना होगा? P क्या है? 2002. Let these two lines are linked. So 2002 minus 2000. 2002 minus 2000 is what? By default it is looking 2. But it is going to divide by size of this data. आ रहा साथ में? बस कर देंगे तो यहाँ 1 आएगा. आ रहा है साथ में कि बस आप लोग देख रहे हैं? जैसे यहाँ +1 किए, +1 किए क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे 4 से हो जाएगा. ऑलवेज डाटा टाइप से मल्टीप्लाई होगा, डाटा टाइप से डिवाइड होगा. समझ रहे हैं? अगर फ्लोट हो जाए डबल हो सकता है. लेट इट इज नॉट इंटीजर डबल. क्या होगा? +1 मींस क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 8. और दो एड्रेस का डिवाइड माइनस करेंगे, टू एड्रेस का माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे. तो डाटा टाइप जैसा होगा उस तरह से काम करेंगे. ठीक है? विनोद, क्लियर? वेरी गुड. देखेंगे नेक्स्ट. I equal to pointer P plus pointer X. बिल्कुल सही. इनकरेक्ट होने से कैसे? ये एड्रेस है, देखिए तो
ये पॉइंटर पी है, पॉइंटर पी मीन्स वैल्यू, वैल्यू। अंजू आप बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट? 30। वेरी गुड। पीछे आ रहा है? वेरी गुड। सो आई इक्वल टू 30। लेट x इक्वल टू एड्रेस ऑफ I इक्वल टू x। You cannot change address of any variable, change the value of variable। किसी का एड्रेस चेंज नहीं करने का क्षमता आपको है। ये क्या है? एड्रेस ऑफ I चेंज करें। So you cannot change the address of any variable, but you have power to change the value of variable। क्लियर? जैसा होता है ना कि आपको पूछेगा कि घर कहाँ है अंजू, घर कहाँ है? अमेरिका चले जाएंगे, फिर वे घर कहाँ है वही बोलेंगे ना। कोई आपका एड्रेस चेंज करेगा अच्छा लगेगा? नहीं ना। So you cannot change the address of any variable। Any mess? आ रहा है? It means it is wrong। Now x equal to address of p। So it is a kind of error। What? So it is address of p। P is what? Single pointer। So address of single pointer can be stored only in double pointer। Clear? So single pointer can hold address of all normal variable, double pointer can hold address of single pointer, and triple pointer can hold address of double pointer। आरएसआर में लिख लेंगे इसको। Single pointer can hold address of normal variable, उसके बाद डबल पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर। डबल पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर। ट्रिपल पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर। Triple pointer can hold address of double pointer, and so on। Got it? So now it is a question that how many level of pointers we can design। अगर and so on है तो क्या 50 लेवल बनाते रहे? Let you try। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल लिखेंगे MAIN। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर P, पॉइंटर पॉइंट 2 बार लिख करके देखेंगे चलता है, चल जाएगा। एक पॉइंटर और बढ़ा देंगे, चलो देख करें, बार बार ऐसे कराते रहे, देखेंगे कितने पॉइंट के बाद एरर रहता है, समझ जाएंगे ओ अब ये रुक गया, मींस इसका लेवल डिफाइंड है। असल में कोई पूछे हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पॉइंटर्स आर देयर, ये क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? बस मेन लिखना है, 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर चल जाएगा, 4 से शुरू करेंगे, चल गया 5 6 ऐसे चेक करेंगे। अगर 50 रुक गया तो 50 रुक जाएंगे, ऐसे कुछ जगह 7 लेवल पर स्टॉप। But it depends on compiler। We cannot set anything, but we can say it depends on compiler। So now let me see example of double pointer। एक उसका भी समझे एग्जांपल कैसा होता है, इसको नोट कर लिए।
So normally when you add 1, then what we need to add? अगर +1 होगा तो x के डाटा टाइप पे डिपेंड करेगा, करेगा ना? It is not always true, okay, in many cases. But let me see example of double and triple pointer. Let me have integer I, j, pointer p, pointer x, pointer q, pointer r. Clear? So it is single point. These two are single pointer. This one is what? And this one is very good. So try to write. So it is I, it is j, it is p, it is x, it is q, and it is r. Let address of I is 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, and 6000. Very good. I equal to 10. J equal to 20. It means you can store 10 here and 20 here. Correct or not? Very good. Address of P. Let it is P equal to address of I. X. These two are correct or not? P equal to address of I. So it can hold 1000 and it can hold. Now in Q is double pointer. So it can hold address of single pointer. Clear? So in Q what it can hold? 3000. And R is what? Triple pointer. So what it can hold? Address of Q. Address of Q. So now it can hold 5000. So now if someone may ask you what is the value of I, j, address of P, pointer P, Q, address of Q, address of X, pointer X, address of Q, pointer Q, and pointer, right here. Pointer Q, address of R, pointer R, pointer R, pointer R. Clear? So tell me value of I is 10. Very good. J, address of P, pointer P, 10. Address of X, pointer X. आ रहा सोने की बस एक लोग के सब हाँ मिला रहे हैं। आ रहा विनोद वही ये नहीं कि बस एक लोग बोल रहे हैं और हाँ चलिए सर आगे बढ़िए। एड्रेस ऑफ Q, pointer Q, 1000. Clear? Pointer Q. Pointer Q means 1000. Again, pointer means value at 1000 is what? 10. R means address of R, 6000. R means 5000. Pointer R means value at 5000. Again, pointer value at 3000 is what? 1000. देख रहे कैसे काम कर रहा है? Pointer R means एक होता है मैनेजर, जैसे क्या है यहाँ पर देखिए लेवल, एक I है, I, there is J. Manager of this one is what? X. Manager of this one is what? P. इसका कोई मैनेजर है कौन? Q. इसका ही मैनेजर है कौन? R. So it has power to access this one and this one. Clear? असल में ये लेवल होता है. And in examination, if your target is to find correct answer,
always try to design box. Okay, box can help you a lot to understand how you can get different values. जैसे अगर हम ऐसा लिख दें और ये बॉक्स नहीं बनाए तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सही सही? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें टफ होगा। टफ नहीं, अगर एक दो लाइन बीच में डाल दिया जाए तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा। होगा ना? आ रहा समझ में? देखिएगा कैसे होता है खराब। इसको नोट कर लेंगे। नीरज का तबीयत ठीक नहीं हुआ तो यही है कि ना कॉल कीजिएगा, अब बता दीजिएगा सर बुलाए थे। ठीक, एक होता है ना क्लास होने के बाद अच्छा नहीं लगता है जाना, बुलाएंगे ना। उधर से दोनों ये गई छोड़ने के लिए, वो भी फंस गई। कौन? सोफिया ना। कम से कम 4 स्टूडेंट अभी कम है क्लासरूम में, 4 से 5। रोशन, रोशन इज मिसिंग। नहीं नहीं, उनका हो चुका है। हाँ, वो सब आए थे, मई में आए। एक दो बच्चे थे, अकेला अनु बैठते थे क्लास। एक सिंगल स्टूडेंट के लिए क्लास चलता था, हम आया करते थे सिंगल स्टूडेंट के लिए। कहां से कहां? बहुत दूर से आते थे। बहुत लोग कहते थे कि नहीं चलेगा, सचमुच में नहीं चलेगा। फिर भी नहीं, एक आया है तो उसको पढ़ा दिया जाए। बन गया? ज्यादा दिक्कतें होगी, ध्यान से देखेंगे। हाँ, देखेंगे ध्यान से। So let me assume it is your given input and
I'm going to write some lines, and these are independent statements. Your target is to identify correct statement or incorrect. If it is correct, then try to find where it changed, in which variable. So if I write pointer P equal to pointer X, pointer Q equal to X, pointer Q equal to pointer Q equal to pointer X, Q equal to address of X, pointer R equal to P or X, pointer R equal to address of P, pointer R equal to address of J, pointer R equal to address of X, pointer or Q equal to address of X, J equal to pointer Q, I equal to pointer R. Yes. So from these given statements, try to find where is there any problem or not. अगर प्रॉब्लम है तो बताएंगे कहाँ है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कहीं कहीं चेंज हो रहा होगा ना चेंज, जहाँ चेंज हो रहा बताएंगे कि किस जगह चेंज होगा, बस ये बॉक्स बनेगा. क्लियर? So first you can note down, even I may write something else also. So you need to note down all these statements and then try to find is there any problem or not. सुभरा आ रहा है समझ में? पहचानना है कहाँ कहाँ सही है कहाँ कहाँ गलत है. प्रिया, आपको हेल्प लेना है अगल बगल से, ठीक है? I am giving you 5 minutes time to find whether these statements are correct or not. समझना कि ये सभी लाइन क्या है, इंडिपेंडेंट. अगर सभी लाइन इंडिपेंडेंट है तो देखना कि कैसे काम करता है, ठीक है?
बहुत ज्यादा सोच रही है। इतना नहीं सोचना है, बनाना है। ये तो इतना सोच लेंगे ब्रेन में ही सब हो जाए। चलो कॉपी कलम चला रहे हैं यार, नहीं ठीक से जल्दी जल्दी बनाइए। बस सोचना नहीं है, बनाते जाना है। क्या बना? वेरी गुड। देखिए सब सही है, एक जगह भी एरर नहीं आया। हाँ वो भी चलेगा, हाँ वो भी चलेगा। यहां से बताइए सही है गलत है? ऊपर से कितना सही मिला आपको? हुँ? ये करेक्ट है ये सभी? नहीं? हुँ? सब करेक्ट नहीं है। और नीचे से ये देखिए कुछ स्पीड भी मैटर करता है। कभी कभी होगा कि हम सोचते रह जाएं, ठीक है। देख रहे हैं कितना सोच रहे हैं आप। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। सोचना नहीं है। पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर x। So p means 1000. Pointer means what? You are going to store value in 1000. That is in I. Pointer x means 2000. Pointer means value add to the 20. So 20 is going to store in I. So it is I equal to 20. Pointer q equal to x. So x holds what? X holds 2000. 2000 means what? It is address of normal variable. So who can hold address of normal variable? So you are going to store x or not? You are going to store x. So who can hold address of normal variable? Single pointer. So whether that one is single pointer, by looking, you cannot decide. You need to ask. You need to ask. If it is q, then you are going to store in this place. But it is not q. Pointer means at 3000, that is in p, you are going to store x or not. So p can hold x. So it is equivalent to p equal to x. It means it is correct. So p can hold x means 2000. आंसर इधर ये सही है। नीरज ये थर्ड लाइन
बिल्कुल सही। सो क्यू मीन्स पॉइंटर एक्स, पॉइंटर एक्स मीन्स वैल्यू, x का मतलब क्या हुआ, x means 2000, pointer means value at 2000, that is 20, so it is value. Who can hold value? Only normal variable. So try to ask whether this one is normal variable. Clear? ये दिखने से नहीं देखना कि नॉर्मल वेरिएबल है कि नहीं, पूछेंगे इसको। q means 3000, पॉइंटर का मतलब 3000 पर रखना है, that is in p. Again pointer means 1000 पर रखना है, that is I or not, in I you are going to store. अरसद में क्या कहानी है, ये नहीं कि दिखने से कुछ नहीं होता है, पूछने से होता है। जिस होता है कि दिखने से बहुत स्मार्ट है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा नॉलेज है, पूछेंगे, बैठो तुरंत पूछे, फटाफट बताएगा, ठीक है। इसने कि स्टार स्टार लगा लिया तो ठीक से पूछेंगे उसको। x means 2000, pointer means value at 2000, so value at 2000 is what, 20, that is normal value. So who can hold normal value? Only normal variable. Whether this one is normal variable, by looking, never try to see. Looking में ये नहीं कि हाँ हो गया, पूछेंगे इसको। Q means क्यों जाता in place of 3000, but it is pointer. Pointer का मतलब क्या, 3000 पर जाना है, यही ना। Again pointer means 1000 पर जाना है, that is in I. It means I can hold normal value. That's why it is correct. Understand me? Q equal to address of x. X is what? Single pointer. Address. Who can hold address of single pointer? Dual pointer. Whether it is dual pointer, yes, Q is dual pointer, है ना? तो Q के अंदर आ सकता है. Q can hold address of x. Address of x means 4000. जानते इससे क्या होता है? अगर इस लाइन को हम दिखाएं, इस लाइन को दिखाएं, तो जानते क्या होगा? देखिए ध्यान से कि Q किसको रख लेगा? 4000. जैसे Q रखेगा 4000, Q रखेगा 4000, इसका अंदर क्या हुआ? अब ये किसको पॉइंट करेगा? किसको पॉइंट करेगा? Q किसको पॉइंट करेगा? X. अगर R जब इस रास्ते से आएगा तो अब J को टच करेगा, ऐसा में गॉट इट। तो आपको पुराना याद रहेगा कि Q ही तो चेंज हुआ है, R चेंज नहीं हुआ है, मगर R इसको पॉइंट अप नहीं करेगा, तो R जब इस रास्ते से भाग इधर जाएगा ना, तो बॉक्स बनाने से ही पता चलता है, बिना बॉक्स पॉइंटर में इम्पॉसिबल है आंसर बताना। क्लियर? नियरली इम्पॉसिबल। बॉक्स नहीं बनाइए, अच्छे दिन रहेंगे, उस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं तो वो गलती करके अगले बार ठीक हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटर आर इक्वल टू एक्स, वेदर दिस वन इज करेक्ट और नॉट। कैसे क्या होगा चेंजिंग? एक्स मीन्स 2000. So who can hold 2000? 2000 is address of normal variable, so it can hold only single pointer. Whether this one is single pointer, दिखने पर नहीं जाते हैं, पूछने पर जाते हैं, याद रखना है, पूछेंगे। आर अगर होता तो आर रखते। पॉइंटर आर मीन्स you are going to store in 5000. Again pointer means you are going to store in 3000. So you are going to store in 3000, that is in P. P is what? P holds what? X. X means 2000. Means P can hold address of normal variable. आ रहा समझ में? सोच समझ के आ रहा है? नीलम कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ अपने से बताइए, आप ये सब कम से कम लगाइए ब्रेन। नोट किए हैं वहां पर? वहां नोट किए हैं? सर झुकाते हैं, यहाँ नहीं देखते, यहाँ वहां जो नोट किया हुआ है, इधर क्या देखेंगे? सर नीचे होना चाहिए बनाने वक्त।
आप लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, और बच्चे को नींद नहीं खुलता है, कॉल करते हैं, उठाते भी नहीं है। हुँ, अच्छा, अच्छा। तो जी आपको क्लास करने में दिक्कत हो रही है और जो क्लास करते हैं उनको दिक्कत हो रही है। जो क्लास नहीं करेंगे कितना अच्छा बनेगा एग्ज़ामिनेशन में? हुँ, नीरज? रश्मि, हाँ। देखिए, अब देखिए आपको इतना टाइम लग रहा है, तो जो क्लास नहीं करेंगे उनको कितना टाइम लगेगा? वो तो कुछ नहीं कहेंगे, बस ऐसा होता है लगाते जाओ, ठीक है? लगाते जाओ, सब सही है। रजनी, बना कि नहीं? तेज़ी से, बन गया सब? लीजिए, यहाँ बन के तैयार है कब? पता है ना? कितना लेट आए हैं ये भी? फर्स्ट क्लास और बन गया। हाँ, विनोद बना? दिखाइए, देखें। 2 बचा हुआ, हाँ, देखिए। हुँ, किसमें एरर मिला? विनोद, कोई किसी में एरर मिला कि नहीं अभी तक और? यस, इट काइंड ऑफ एरर। चलिए यहाँ एरर मिला और पॉइंटर क्यू, हाँ, इसमें भी एरर है? नहीं, इसमें एरर नहीं। पॉइंटर क्यू का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ पॉइंटर क्यू इज व्हाट? 10, 10 means value of normal variable. So who can hold value of normal variable? आ रहा समझ में? ये तो सही था। So J is what? J equal to 10. Why there is problem? Pointer R. Pointer R means what? R means 5,000. Pointer means 3,000. Again pointer means what? 1,000. So 1,000 is address of normal variable. So I cannot hold address. Clear? That's why it is error. Is there any error in this place? No. All are correct. Come to here. Pointer Q equal to address of I. Yes. Address of I. Address of I is yes 1,000. Who can hold? Only single pointer. Whether it is single pointer by looking, never try to say. Ask. Q means here. Pointer means at 3,000 you are going to store. That is in P or not.
So in P, you are going to store address of I, that is 1000. Clear? ऐसे ऐसे देखना होता है, ऐसे नहीं देखना होता कि लिखा है सिंगल पॉइंटर होगा. Tell me whether this one is correct. Address of x is what? 4000, and it is what? Address of single pointer. Who can hold address of single pointer? Dual pointer. R means here. Pointer R means at 5000 here. Pointer again means at 3000. It means you are talking about in P. So in P you cannot store address of x. P is a single pointer and it is address of single pointer. So address of single pointer can hold by dual pointer. दिखने में क्या लगता है? बहुत अच्छा. एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर कौन लेता है? डबल पॉइंटर. साफ साफ लिखा हुआ है ना. दिखने पर नहीं जाना. Investigation. After investigation, you can say something. So it is incorrect. Pointer R equal to address of I. See, point address of I. I is what? Normal variable. Address of normal variable. Who can hold address of normal variable? Single. By looking, it is correct or not? Single pointer दिख रहा है ना? ऐसे नहीं होता है. पूछेंगे. आ रहा समझ में? Proper investigation. If it is R, then we are going to store here. Pointer means what? At 5000 location, that is in Q. So in Q, you cannot store address of normal variable. So it is incorrect. Q equal to address of J. Address of J means address of normal variable. Who can hold single pointer? So you are going to store in Q. In Q means it is dual pointer, so it is. आ रहा है साथ में कि नहीं? तो रश्मि तेज तेज बनाते हैं जितना कहने ये नहीं कि बस सोचेंगे और हाँ ज्यादा थिंक नहीं करना. ठीक है, इतना थिंक करते कि सोचते रहते हैं. अब करें करें कि ना करें. देख रहे हैं ऐसे नहीं. मिटा दे से आगे साथ में. So at least you got some idea about pointer. Now after this one, let me see one term which is known as qual by value and qual by reference. So right here, qual by value and qual by reference. So what is the meaning of qual by value? हाँ, ये इसका यूज है फंक्शन में. क्लियर? So in function, when we supply any expression which does not take any address, then it is known as call by value. In function, when we supply any expression, but that expression is addressed, then it is known as call by reference. क्या है? एक्सप्रेशन. वर्ड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट लिखेंगे. कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होगा? when we supply any expression in function, and result of expression is not addressed, then it is known as call by value. आ रहा समझ में? Otherwise known as call by reference. Otherwise known as call by reference. Otherwise का मतलब क्या हुआ? That is, it is what address? See, when we have integer I equal to 5,
j equal to 12. Pointer p, it is pointer p equal to address of I, and pointer x equal to address of j. Clear? Or only pointer. When we call a function, so we can supply expression. It may be I plus 2 or not. It may be p. Let x equal to p plus 1. X equal to p plus 1 is correct or not? Correct? See here. I is what? 5. J is 12. Address may be 1000. It is what? 2000. And address of p is, let 3000. So p holds. Address of I. Address of I means 1000. Clear? And here x is what? Address may be 4000. And here in x you are going to store p plus 1. P plus 1 means what? 1002. So this p means you are going to send reference. Here someone may say x minus p. So x minus p is what? X is address, p is address or not? So these two are addresses, whether it is called by reference. Returning value of this expression is what? X is 1002, p is 1000. Difference is what? 1. 1 is constant value or not? So it is not called by reference. RSR में expression, after evaluation of expression, see result. If result is normal value or expression normal type, then we can say call by value, otherwise known as call by reference. Got it? So let this function is going to write. After this one, someone may print what? %d, I and j. So when we call this function, there might be some changes. Clear? Let me put only I here. Okay, only I. Now we are going to design a function f. So in function f, how many parameters are there? 3 parameters. It is parameter or you can say argument. Both are equivalent. So we have integer, let variable, we can say a. Second is what? It is pointer q. Why q? Because of p. P is what? Pointer. P contains what? P contains 1000. So when we supply 1000, so who can hold? Only pointer. So you need to design a single pointer. Clear? But when you supply address of p, then it should be double pointer. Got it? And now it is integer b. Why b? Because of returning value of this one is 1. Got it? Now a equal to a plus b. Pointer q equal to a and q equal to address of a. Pointer q equal to 100. Okay, this one is given. Now if it is in main function, someone may ask you, after when you print value of I and j, so initial value of I is 5 and j is what? 12. So tell me what is the output of this function? So whenever there is pointer, only one method can help you to find correct answer. Only one method. Design what? Box. Yes, you know. Design box. बॉक्स नहीं बनाएंगे, देखते रहेंगे. यस, या गया, वाह, बहुत अच्छा, ये होगा.
There are some errors like semicolon mistake. इसी ने कहा सर semicolon mistake था, ये सब नहीं बोलना, ठीक है? ये होता है ना कि सर ये सब मिस्टेक है, मान चला कि सही लिखा हुआ है, ठीक है? आजकल देखना है, एक्स्ट्रा सेमिकॉलन है, कोमा है, ठीक है? जैसे ना यहाँ भी सेमिकॉलन लिख दिए हैं, सर यहाँ भी लिख दिए हैं, ये कोई तरीका हुआ? हटाइए इसको, कोमा लिखिए, ठीक है? So you can note down first this one. Then I may show you and always try to follow that method to get correct answer. Clear? If you want to get correct answer, Priya, so what you need to do? Always try to design box. First like this one, in this place. When we will come in this world, it means that A is a new variable, Q is a new variable, and B is also new variable, new branded variable. ठीक है, ब्रांडेड है, ये नहीं कहेंगे वहां का है। कभी कभी सेम नेम होगा, यहाँ आई देगा, यहाँ आई देगा, ये नहीं समझेंगे कि ये वही है। इट इज न्यू, इवन नेम इज सिमिलर, यू नीड टू क्रिएट न्यू। Pointer means never try to apply your brain, always try to design a box. Box can give you one of the perfect answer. अगर आप सोच लिए ज्यादा तो आप फंस जाए 100%, ऐसा चीज। जो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं वो तो देख के पहचान लेते हैं, देखते ही पहचान लेते हैं क्या हो रहा है। अपने मन से हिट एंड ट्रायल कीजिए, क्या होगा। देखिए, सो ए इज ए न्यू वेरिएबल, Q is also new variable, and B is also new variable, or not. If it is new variable, there might be some address 5,000, 6,000, and 7,000. So A contains what? 5. So whether you can give expression value is going to store here or not, it is what? 5. Q means P is what? 1,000. So Q holds 1,000. Clear? Simple.
Now b means x minus p. So x minus p is 1. So 1 is integer, that's why it is integer. Got it? It must be compatible. First is what? Integer value. So that must be integer type of variable. Clear? P is what? A kind of pointer. So P means address. Address means what? 1000. That is address of normal variable. So who can hold address of normal variable? Single pointer. That's why single pointer is there. अगर इधर उधर कुछ भी लिखने की कोशिश की कंपाइलर एरर देगा. ठीक, कुछ नहीं, एरर. X minus p is what? Expression that can return integer value. So this integer value b can hold 1. Now come here. A equal to a plus b. It means that 6. Pointer q equal to a. Q means 1000. Pointer means at 1000, right? 6. Pointer q equal to a. Q का a का मतलब क्या हुआ? 6. Where you are going to store? Q means here. Pointer means what? At 1000. At 1000 means here. You are going to store or not? देख रहे हैं कैसे काम करता है? Come here. Q equal to address of a. So Q equal to address of a. So Q holds 5000. अब देखिए pointer Q equal to 100. Q means 5000. Pointer means what? Value at 1000. यहाँ कितना आएगा? 100. और कहीं नहीं आएगा, वहां नहीं हो रहा है. देखे नहीं, यहाँ हुआ कुछ. ठीक है. Close. These are auto variables. So these variables are going to destroy. Auto variables. Clear? When will come in this world? I is what? 6. J is what? 12. समझ में? हमें कैसे आ रहा है समझ में कि ये 100 कहां जा रहा है? 100 यहां जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है. सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन ही नोन हो सकता है पॉइंटर का. व्हाट इज द आउटपुट? कौन? कौन? जो क्या करते हैं? बॉक्स बनाए. जो बॉक्स नहीं बनाए, देखते रहेंगे और देखते रहेंगे. देखिए और देखना है और कुछ नहीं होगा. बाहर निकलते चले जाएंगे. ठीक है. ओनली ट्राई टू डिजाइन बॉक्स, नेवर ट्राई टू अप्लाई ब्रेन. ब्रेन लगा एक ऐसे ऐसे जा रहा है, हो गया ऑल क्लियर. कहीं कहीं ब्रेन लगाना है, पॉइंटर में ब्रेन नहीं लगाना है. रूल बॉक्स. ऐसे क्या लग रहा है कि पॉइंटर इक्वल टू ए किया था, समझ आ गया. अगली बार हम क्यू को चेंज कर दिए, वहीं पर डायरेक्टली हम उसको लोकल दे दिए एड्रेस, और वहां हम कुछ चेंज किया था, यहाँ इफेक्ट होगा ही नहीं. आ रहा है समझ में? प्रिया आ रहा है? विनोद सही है? Again, why not? So let me see here. I is what? I is 5. So this 5 is going to store in A. This 5 is going to store in A or not? A is a new variable. That is 5. 5. Now next one is what? P. P means what? 1000. You are sending 1000. 1000 is what? Address. Address of normal variable. So who can hold address of normal variable? Single pointer. So there must be single pointer there. If you are not going to write, it can give you error, compiler error. ठीक है? रन तो देखें compiler नहीं error मारते. So now in this case, Q is a single pointer and it can hold what? It can hold. You are sending P. You are sending P. P means 1000. So 1000 is going to store in Q. So in Q write 1000 or not. Now x minus P. X is what? 1002 minus 1000. That is 1. 1 is integer. Do you know returning value of this one is integer? So who can hold in? Okay, this one. Only and only normal variable. Never try to design pointer. बनाने में टाइप करने में कोई रोकेगा नहीं आपको. टाइप कर दीजिए. रन कराएंगे ना रोक देगा. रुको. समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा? B holds what? 1.
there is also okay one address like this. Now a equal to a plus b. A is this one. Even a variable may be here, you cannot touch because of you are in this world. Clear? A is 5. 5 plus, you know, a plus b is what? 6. Where you are going to store 6? A, yes, right here 6. लिख सकते हैं? आता ही सब करना? बहुत अच्छे. Pointer q equal to a. A means 6. Q means 1000. Pointer means value at 1000 equal to 6. Value at 1000 equal to 6. So value at 1000 here. See, value at 1000 equal to 6 here in this world. यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इसको मिटाकर 6 कर देंगे, फिर चलते हैं वहां पर. आ रहे हैं यहाँ पर. आ गए? अगला लाइन. Q equal to address of A. Q is what? Pointer, single pointer. So single pointer can hold address of normal variable. A is what? A is what? Normal variable or not? So normal variable. So address of normal variable can be stored in single pointer or not? Clear? So Q is what? Single pointer. So it can hold address of A. Address of A is 5000, which is going to store in or not? आ रहा है समझ में? आ रहा है? बहुत प्रैक्टिस करना होगा तभी आता है. उसके बाद 100 is going to store. 100 is what? Normal value. Who can hold normal value? Only normal variable. Q means what here? But pointer means what? At 5000 location. At 5000 location means in this location or not? In A. What? 100. Correct? Do you know any error? After closing of this one, all these variables are going to destroy. Why? It is auto variable. It is auto. Auto, register, static, external. 4 classes. सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाते ऑटो. और यहाँ आते इस दुनिया में when you will come in this world, so these variables are available for this one. I is what? 6. J is what? 12. आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? इधर 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 आ रहा है ना? हाँ वही. ठीक से थोड़ा सा टाइम पर आएंगे. देख रहे हैं? ये सभी कुछ नहीं जानते थे. ये सब सुने जानते कभी नहीं. जो लेट आते हैं, जो एकदम बिल्कुल अभी और सोए हुए समझ रहे, वो तो कहेंगे वाह एग्जामिनेशन आएंगे ऐसे टिक मारेंगे ना कि पढ़ने लिखने वाले भी नहीं आएगा सवाल. ठीक है? आप पढ़ लिख के भी ना पूछेंगे वो हम ऐसे मारेंगे. यस. और दिल से खुशी होकर निकलेंगे कि आज हम बना दिए पॉइंटर का क्वेश्चन. कुछ नहीं था. ठीक है? ऐसा में और जो मेहनत करेंगे उनका चेहरा ऐसे आ जाता है. देखो टेंशन में गलती किया है. ठीक है? और जो कुछ पता नहीं है बहुत अच्छे. कैसा? बहुत अच्छा गया. देख रहे ना? समझ रहे ना कैसे दिक्कत होती है? ठीक से मिटाने से. एक और एग्जांपल है. जा सकते. ठीक है? ठीक से टाइम पर आएंगे तभी आएगा समझ में. ठीक है? हाँ वही ना. इनको तो हम थोड़ा मेकअप करवा दी नहीं तो नहीं तो बाउंसर ही आता जाता ना. देखिए ध्यान से एक और दे रहे. मेन इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7. स्वैप 1 एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b. printf %d a b. swap 2 a b. printf %d a b. swap इतना ही रखते हैं. इतना ही रखते हैं काफी. हाँ सब इतना ही. कोई बात नहीं मिटा देंगे. swap 1. So here
when we are going to send address of A, so who can hold address? Pointer. So we need to create pointer variable here. नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? एरर देगा. क्लियर? So it is what? Integer pointer P, integer pointer Q. Let we have integer pointer T. T equal to P, T equal to Q, Q equal to T, and let it is going to close. Got it? So tell me, after this one, what it can print? हाँ, किसका एड्रेस ऑफ ए हम दे रहे हैं, कौन लेगा वहां? पॉइंटर लेने वाला. देखिए यहाँ पॉइंटर ले लेगा उसका एड्रेस, लेगा ना. एड्रेस ऑफ बी, अगर हम बी सेंड करें ओनली बी, तो वहां क्या होगा? इंट होगा, आईएनटी. पॉइंटर नहीं हो सकता. क्यों? वैल्यू दे रहे. समझ में? अगर यहाँ ए लिख दे, ये हटा दे, तो वहां क्या लिखेंगे? क्यों लिखना पड़ता? पॉइंटर लिखेंगे, एरर मार देगा तुरंत. देखिए दे रहे हो वैल्यू, लिखो पॉइंटर. कंपाइलर ही देगा, जाओ पढ़ लिख देगा ना. जब एड्रेस देंगे, एड्रेस तो वहां कौन होना चाहिए? नॉर्मल वेरिएबल लिख देंगे ना तो एरर दे देगा, और पढ़ लिख के आओ. समझ रहे? इसलिए एड्रेस देंगे तो क्या होना चाहिए वहां पर? पॉइंटर. पॉइंटर नहीं देंगे, एरर. समझ रहे? जो भी है समझ में अब काम करें. बताना है व्हाट इट कैन प्रिंट. नहीं, जो लिखा है वही सही है, जो लिखा हुआ. Statements are correct. There is no any error in this program. Your target is to find what it can print. कुछ किए हैं कि बस ऐसे हैं? अभी तो आप तो लिख ही रही हैं. अच्छा, ये नहीं लिखे थे ना. It can print only two values. So it can print A and B. So what it can print? Value of A is what? Value of B is what? See, your target is to perform procedure.
What is the procedure? Let A is what? Variable. Address is 1000 and B is what? Variable. Let address is 2000. It is 5 and 7. When you send address of A, it means P can hold or not. Address of A is what? 1000 and address of B, it must be pointer, otherwise it can give you error. 3000 and it is what? 4000. There is the address of these variables. Now T is a local variable. These are local variables. T means what? It is what? Let 5000. Now T equal to P means 1000. So T has power to take address. Why? T is a pointer, single pointer. So T can hold. Okay, 1000 or no? P equal to P. P equal to Q. P equal to Q means here you are going to write 2000 or not? Then Q equal to T. In Q, what you are going to write? 1000. Got it? Then what will happen? When this block is going to close, all these variables are going to destroy or not? Come to this one. Come here. What is the value of A? 5. What is the value of B? 7. Understand me? Okay, sir. बॉक्स बना के कैसे? बॉक्स नहीं आता बनाना, छोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्यों टाइम पास करो उसके लिए, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दस में आ रहा है? वेरी गुड, सही सही से ध्यान देना है। कुछ भी लिखे स्वैप, ये नहीं कि स्वैप हो जाएगा, लिखने से क्या हुआ? किसी का नाम युधिष्ठिर, इसका मतलब क्या हुआ? सही बोलता है, सब झूठ बोलने वाला होगा, ठीक है कि नहीं? नाम पढ़ने जाना है कि स्वैप लिखा है तो स्वैप तो करेगा ही, क्या करेगा पूछेंगे जाकर के। When we are going to ask, obviously in that case you will investigate and you can find correct answer. और एक लिखें, अब यहां लिखते हैं पॉइंटर 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 पॉइंटर। क्लियर? Now tell me what it can print. एक तरीका है, जल्दी से बोल दे। अंदर होता है ना? हाँ सर, अब होगा, अंदर से निकल रहा है, अब होगा, ठीक है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो ये कहेगा वो बात मानना है। आ रहा है समझ में? यस, टेल मी व्हाट इट कैन गिव इन रिजल्ट। सही है कि गलत है ये भी जानना है। कभी कभी कुछ से कुछ डिग्री आप चलाते जा रहे हैं, वाह अच्छा है। गलत से पता है सर, ये चलेगा ही नहीं, ये नहीं कि बस चला रहे हैं सर तो बोल दिया तो इसको चला के रखे। कुछ नहीं होगा, एग्जामिनेशन से बाहर निकलेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। अच्छे से आ जाएगा समझ में कि हाँ यहां मिस्टेक किए थे क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए थे, पढ़ाई अच्छा नहीं की थी सच में। इसका ऑप्शन ऐसा देगा, ए क्या 5 7, ऑप्शन बी 7 5, ऑप्शन सी 7 7, ऑप्शन डी 5 5, ऑप्शन ई एरर। अब ये देखिए कि ये क्लास अगर हम सिर्फ कैमरा देख कर पढ़ाएं कितना अच्छा रहता है। कितना टाइम देंगे? कैमरा देख हम पढ़ाएं
बस उड़ा देंगे, समझो या ना समझो गए। ये यहाँ होता है, बैठ के बनाइए, समझो ओ कितना हमसे गलती हो रहा है ना। सही से अपना बनाएंगे। कुछ आया? नहीं, क्या सोच रहे? 5 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ज्यादा दिक्कत होती है एरर भी बता सकते हैं। लग रहा है, लगने से होता है क्या? शायद, शायद से भी नहीं होता है। कौन? ऑप्शन इज करेक्ट, एरर। सी हाउ, लेट यू प्रोसेस, प्रोसेस करना ना चाहिए। So in P, we are sending address of 1000. We are sending, yes, 2000. It is in pointer T, so it is this one. Pointer T equal to pointer P. P means what? 2000. Pointer means value at 2000. That is 7. So this 7 is going to store where? Where? At location of T. T का जहां T जिसको पॉइंट करे वहां पर। क्लियर? P means what? P means, yes, yes. P means 1000. Pointer means value at 1000 is 5. Yes. So 5 is going to store somewhere. Where? In pointer T. It means there must be some address here. So in that location it can store. Pointer T means what? Not in T. Not in T, but somewhere else or not. Got it? क्या कर रहा है?